Is my voice clear, Dinesh ji? Jaya ji? No, because there were some people who were telling the voice is not clear. That's why I just want to be sure. Matters to be raised with the permission. Sri Ghulam Nabi Azad. Sir, Rajya Sabha Ghulam Nabi Azad. Please. सर, मुझे जम्मू कश्मीर के बारे में वहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ, जो तकरीबन 13 महीने से जब से स्टेट का डिवीज़न और डाउनग्रेड हो गई यूटी में, तब से वैसे ही टूरिज़्म ख़त्म हो गया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ सब ख़त्म हो गई और किसी तरह की कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी 13 महीनों से नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करने के लिए पुरानी सरकारें जब इलेक्टेड गवर्नमेंट होती थी तो प्रयास करती थी। 2003 में जब कोलिशन गवर्नमेंट थी कांग्रेस की और पीडीपी में, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो एजुकेटेड और टेक्निकल एजुकेशन जिन्होंने प्राप्त की थी, जो इंजीनियर्स थे जिनकी संख्या हजारों में थी, उनको एम्प्लॉयमेंट देना असंभव था। इसलिए सरकार ने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स की स्कीम बनाई। पूरे देश में तो महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप थे, लेकिन जम्मू कश्मीर शायद एक ही स्टेट था जहां सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स था और इनके लिए वो काम करें एज कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि बेसिक नॉलेज तो उनको था ही। तो उनके लिए 5%, उनके लिए 10% रिजर्वेशन रखी थी। पूरे कामों के लिए जो डेवलपमेंट वर्क्स थे उनको अलॉट किए जाते थे। पहले जो लेता था एक ग्रुप 5 लाख से ज़्यादा काम नहीं कर सकता था और जो जो उन ग्रुप्स को एक्सपीरियंस होता गया 5 से 10, 15, 20, 50 लाख तक किया और बाद में जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया वो 1 करोड़ तक कॉन्ट्रैक्ट ले सकते थे और इस तरह से 15,000 अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करते थे। तो इतने सालों के बाद 2003 से लेकर तो 15,000 अनएम्प्लॉयड जो इंजीनियर हैं वो कॉन्ट्रैक्टर बन गए थे, अपनी रोजी कमाते थे। लेकिन 4 दिन पहले सरकार ने उन तमाम सेल्फ हेल्प ग्रुप सिस्टम को ही ख़त्म किया और इतने 15,000 जो इंजीनियर थे वो अब सड़क पे आ गए हैं। मैं केंद्रीय सरकार का ध्यान दिलाता हूं कि उन 15,000 इंजीनियर्स को दोबारा से वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्कीम शुरू की जाए। Thank you. I hope the government will take note and pass it on to the LG, the governor. Sri B. Lingaya Yadav, Telugu. Lingaya, ekkadunaru? Kahan hai Lingaya? No, absent I think. Sri P. Bhattacharya. సార్ ఇక్కడ ఉన్నా సార్. భట్టాచార్య జీ, లోక్సభ హాల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం సార్. లోక్సభ చెంబర్ లింగయ్య యాదవ్ మై ప్రదీప్ భట్టాచార్య ఫ్రమ్ లింగయ్య సార్ తెలుగులో చెప్పండి సార్. ఏం లేదు సార్, ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా పథకం గతంలో ఉండే సార్. దీన్ని ఈ పిఎం ఫసల్ బీమా పథకాన్ని దేశంతో పాటు మా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా ఆపేసింది సార్. దీంతో రైతులకు చాలా ఇబ్బంది జరుగుతుంది సార్. అసలు గతంలో గ్రామాన్ని యూనిట్గా తీసుకోవటమా ఈ బీమా పథకాన్ని, లేకపోతే రైతులను యూనిట్ తీసుకోవటమా అనేటువంటిది క్లారిటీ లేకుండా రాను అసలు ఈ పథకానికి నిధులు ఇచ్చేటువంటిది కాదు కదా, దీన్ని నిర్వీర్యం చేస్తున్నారు సార్ కేంద్ర ప్రభుత్వం. కాబట్టి దీన్ని వెంటనే ఈ యొక్క ప్రధానమంత్రి ఫసల్ బీమా పథకాన్ని కంటిన్యూ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం సార్. మహారాష్ట్రానికే సుమారు 511 కోట్ల బకాయిలు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఉన్నాయి సార్ ఈ పథకాన్ని. కాబట్టి కమర్షియల్ క్రాప్స్ ఉన్నాయి మా రాష్ట్రంలో, పత్తి కానీ మిర్చి కానీ ఇటువంటి పంటలు కూడా వంతున్నాయి సార్. ఈ పంటలకు ఈ యొక్క బీమా ఉన్నట్లయితే రైతులకు ఇబ్బంది ఉండదు సార్.
కాబట్టి ఈ యొక్క రైతుల ప్రీమియం కూడా వీలైతే దేశం అంతా మా రాష్ట్రంలో కూడా ప్రీమియం అంతా కూడా రైతులది ప్రభుత్వమే కట్టించి ఈ యొక్క ఈ पीएम फसल बीमा పథకాన్ని కంటిన్యూ చేయాలి సార్। మంచి पूरा देश में ये होने का है, किसानों को बहुत प्रॉब्लम है सर। ये पीएम फसल बीमा योजना को आगे लेके जाना क्या है सर। धन्यवाद जी। श्री पी भट्टाचार्य जी। भट्टाचार्य लोकसभा प्लीज। यू लुकिंग लाइक ए डॉक्टर। Sir, what would I do? It is Okay. better to protect ourselves. Please, please. Sir, I like to bring kind notice of Honorable Health Minister to a particular very important issue. In such a dangerous condition what is prevailing in our country, I got the information that even some of our Lok Sabha and Raj Sabha colleagues, they were also having with the positive. That is a very dangerous situation. In this situation, I must have to say our honorable Health Minister, the traditional system of medicine, the allopathic medicine, definitely it will continue. But at the same time, like allopathic medicine, there should be the national homeopathic helpline composed of experienced homeopathic doctors to extend the treatment for the reaching of the every home, research for development of homeopathic vaccination to be expedited. These will gain a new financial impact in the health sector. Sir, further, in hospital and ICU cases, option offering the homeopathic support to be extended. Sir, I have seen in homeopathic hospital in Calcutta, there is no arrangement of ICU. There are arrangement for the allopathic treatment. What are going on in the different hospital, that is good. But for the homeopathic hospital, ICU arrangements are to be made. The specific gene-based individualistic homeopathic drugs to be scientifically sorted out for saving the billions of lives in the grassroots level. Right. Sir, lastly, I would like to mention it very clearly, sir. Personal experience says that some of the homeopathic medicines are very, very useful for the people to protect themselves from coronavirus. So I would request our Honorable Health Minister to put a proper attention to this system. Don't neglect this system. All over the world has accepted this system. So I know that some of the allopathic doctors and some people may not like these things, but for the common people, these homeopathic arrangements are to be made properly by the health ministry so that common people may get the justice Right. from them. Thank you, sir. Right. Bhattacharya ji met me yesterday. He suggested some homeopathy medicine for me also. Sri Javed Ali Khan. के लिए सरकार ने सरकारी गेहूं खरीद का दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य 1925 रुपए तय किया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि किसानों को 1925 रुपए के बजाय उनके हाथ में 1905 रुपए ही आ रहे हैं। मैं स्वयं अपना गेहूं बेचने के लिए जब सरकारी गेहूं खरीद पर गया, केंद्र पर गया, तो मुझसे सेंटर के संचालक ने उतराई, छनाई व सफाई के नाम पर 20 रुपए प्रति कुंटल नकद देने की मांग की। मैंने उससे कहा कि ऐसा कोई आदेश हो तो दिखाओ, तो उन्होंने मुझे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी ये शासनादेश की प्रति दी, जिसमें लिखा गया है
कि उतराई, छनाई और सफाई का व्यय कृषकों को स्वयं जो है वो वहन करना पड़ेगा, जिसकी प्रतिपूर्ति केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त होने के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन उपरांत किसानों को करने के लिए अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। इस शासनादेश में ये लिखा हुआ है सर। लेकिन मैं ये जानता हूं कि पिछले 3 वर्षों में इस प्रकार का जो व्यय किसानों से लिया गया था उसकी प्रतिपूर्ति या भुगतान आज तक नहीं किया गया है। इस वर्ष उत्तर प्रदेश में 36 लाख टन गेहूं खरीदा गया है। 20 रुपए के हिसाब से किसानों का 72 करोड़ रुपया सरकार ने जबरदस्ती ले लिया है। पूरे भारत के अंदर 990 लाख टन गेहूं खरीदा गया है, जिसमें आप हिसाब लगाएं तो 780 करोड़ रुपया किसानों का सरकार ने जबरन लिया है। जबरन शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं सर कि जब हमने सरकार उनसे पूछा कि चेक से पेमेंट ले सकते हो, उन्होंने कहा नहीं लेंगे। अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हो, नहीं करेंगे। नकद लेंगे, उसकी रसीद भी नहीं देंगे। मैं आपके हस्तक्षेप की मांग करता हूं, क्या सरकार की कोई ऐसी मद है जिसमें बगैर रसीद के भुगतान किया जा सकता है? और सरकार कब वापस करेगी ये 72 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के किसानों का और 390 करोड़ महत्वपूर्ण विषय उठाया रुपया पूरे देश के किसानों का? आपने महत्वपूर्ण विषय उठाया। मैं चाहता हूं लीडर ऑफ द हाउस थोड़ा इसके बारे में जानकारी देके। सर किसान वेलफेयर मंत्री बैठे हैं, मुझे बताइए प्लीज। व्याख्या नहीं करना, फिर व्याख्या करे तो उसको पर्पस। आपने महत्वपूर्ण विषय उठाया, मैं भी कंसर्न हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है बिना रसीद पैसा नहीं देना? ये तो भी वापस करना है बाद में, तो इसे इंक्वायर करेंगे। और उसके बाद श्रीमती वंदना चौहान, लोकसभा। This is Vandana Chavan from the Lok Sabha chambers, sir. So my intervention is regarding the need to upgrade digital infrastructure to supplement online learning shortfalls presently. So in the month of July during the lockdown, the death of Adarsh Harare from district Tehsil of Sangli made headlines in the state of Maharashtra. Adarsh sir was a 10th standard student who committed suicide when his father, a marginal farmer with meager means, was not able to buy him a mobile phone for his online classes. Adarsh sir is a telling example of many such cases of deprivation and frustration of a large section of the student population all across our country. The Ministry of Education, Government of India and the state governments are indeed taking timely steps to address this situation in the so-called new normal. However, fact remains that, sir, our students from the vulnerable section of society have been very badly hit. So according to the TRAI itself, in June 2020, the total rural tele-density was 59%. There are only 30 internet subscribers in rural areas per 100 population. Beside the poor connectivity, intermittent electricity and non-availability of devices is making digital education inaccessible to students in the rural area. So though the government has taken great steps for TV and radio learning, peer learning, parent teaching, community teaching, the fact remains that 27% of students, according to the survey of NCERT made recently, have neither smartphones, nor laptops, nor televisions, or radios. So we have a population, student population of more than 240 million students across primary, upper primary, secondary, and senior secondary levels. Sir, we cannot fail our young. And therefore, sir, through you, I urge the government to upgrade the digital infrastructure on a war footing, and secondly, to make at least a basic digital device available to every student who has no access to one. Thank you, sir. Dhanyawad ji. Associate, please send the slip. It's a larger issue. Sri Digvijay Singh ji and Dr. Bhagavat Karad. Digvijay Singh ji पहले नोटिस दिया, इसलिए 2 मिनट और भगत कराद को 1 मिनट. दिग्विजय सिंह जी. दिग्विजय सिंह, राज्यसभा चेंबर सर. प्लीज. सर, कोरोना के ट्रीटमेंट में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पेंडेमिक के पहले जो कीमत थी
ऑक्सीजन की 10 रुपया क्यूबिक मीटर अब बढ़ के 50 रुपए क्यूबिक मीटर हो गई है। सीलिंग जो फिक्स की गई थी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने, उसमें कहा था कि टू अ मैक्सिमम ऑफ 17 रुपीज 17 पर क्यूबिक मीटर। प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो इससे आपके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तो और भी ज्यादा चार्ज कर रहे हैं माननीय सभापति महोदय। साथ में मध्य प्रदेश के देवास जिले में 4 पेशेंट्स की मृत्यु इसलिए हो गई क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था। और इसी प्रकार से देवास, जबलपुर, छिंदवाड़ा और दमोह में ऑक्सीजन नहीं है और पेशेंट्स मरने की कगार पर है। यूपी में जो छोटा सिलेंडर आता था 130 रुपए में, अब बिक रहा है 350 रुपए में। इसी साथ में सिक्योरिटी अमाउंट जो सिलेंडर्स के लिए लिए जाता था 5000 रुपए, उसे बढ़ाकर कर दिया गया है 10,000 रुपए। गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी के राज्य में कोई विषय है नहीं, आप विषय बताए ना। सर विषय तो है सर विषय सर आई एम स्पीकिंग अबाउट द प्राइस। ये सोन सा नेटिव प्लेस है आपका, आंध्र प्रदेश है, मेरा आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, पूरा भारत मेरा। हाँ सर, पूरा भारत है आपका। ओके सर, गुजरात में आपका भी पूरा भारत होना चाहिए। 1 लीटर मध्य भारत से आने के बाद भी पूरा भारत होना चाहिए। सर एक लीटर की कीमत 8 रुपए 50 पैसे से बढ़ के 28 से 25 रुपए तक पहुंच गई है। इसी तरह से उड़ीसा में एक सिलेंडर 6,500 में आता था, अब 10,000 में आ रहा है। रीफिलिंग 10 लीटर का 350 में होता था, अब 900 रुपए में हो रहा है। सभी अधिकांश राज्यों में कीमतें बढ़ती जा रही हैं। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आप लोग बदल रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि इस बारे में सीलिंग को जो एनफोर्स करिए। और मुझे इस बात का दुख है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपने 5 पन्नों के स्टेटमेंट में प्रधानमंत्री जी का तो बार बार नाम लिया, लेकिन पेशेंट्स के ऑक्सीजन सप्लाई में जो कमी है उसके बारे में एक बात भी उल्लेख नहीं किया। डॉक्टर भगवत कराज फ्रॉम लोकसभा। यस सर, लोकसभा। भाई विषय गंभीर है, पॉलिटिकल नहीं है, थोड़ा ऐसे ही लेना है उसको। आप ठीक है सर, ये तो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। भारत देश में अभी तक फिलहाल डॉक्टर भगत। यस सर, भारत देश में अभी तक संक्षिप्त में 49,30,236 केसेस कोरोना के हुए हैं और आज एक दिन में 80,000 केसेस बढ़ चुके हैं। मुझे कहना है कि हर दिन पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और अभी दिग्विजय साहब ने बोले जैसा ऑक्सीजन का ब्लैक चालू हुआ है और रेट भी बढ़ चुके हैं। इतना ही नहीं तो साठेबाजी हो रही है। कोई हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ज़्यादा है, कोई कम है, तो मुझे आपसे रिक्वेस्ट करना है कि इस हर स्टेट में ऑक्सीजन इक्वल सप्लाई होना चाहिए और साठेबाजी नहीं होना चाहिए। उतना ही नहीं तो ऑक्सीजन का सिलेंडर का रेट पूरे देश में धन्यवाद। मैं बीइंग अ डॉक्टर मुझे समझता है ऑक्सीजन, धन्यवाद डॉक्टर भगवत जी। पेशेंट है तो ज़्यादा ऑक्सीजन लगता है, अगर ऑक्सीजन टाइम पर नहीं दिया तो डेथ हो सकता है। तो मुझे रिक्वेस्ट है कि सीरियसली लेके गंभीरता से सब्जेक्ट लेना चाहिए और ऑक्सीजन सप्लाई रेगुलर होना चाहिए। उतना ही नहीं तो मेडिसिन का भी शॉर्टेज। नेक्स्ट रेमडेसिविर इंजेक्शन। मेरा सुझाव यह है, लोग हर एक व्यक्ति अपने बोलते रहे। ठीक है सर। पार्लियामेंट्री अनपार्लियामेंट्री का इश्यू नहीं, पार्लियामेंट चलना है तो बाकी लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। उसका एक नियम है 2 मिनट 3 मिनट, उसको पालन करना। श्री स्वपन दास गुप्ता from gallery, Rajya Sabha gallery. Please. Swapan Das Gupta from the Rajya Sabha gallery number 3. So I wish to draw your attention to some unfortunate happenings which have been taken place at Vishwa Bharati, a university which has been founded by Rabindranath Tagore and of which the Prime Minister is the Chancellor. On August 17, there was an act of vandalism which resulted in the destruction of a lot of university property, the construction of a wall which had been sanctioned by the National Green Tribunal was stalled. Now, it's not for me to go into the recriminations as to who was responsible and who was not responsible, but the whole problem has for long centered on the organization of something called the Posh Mela, which is an institution in West Bengal, which is really an iconic thing for the citizens of Bengal. Now, last year, sir, thanks to some intervention by the Prime Minister, the university
managed to hold it despite the fact that the university is very stretched for its resources of trying to control crowds of over 2-3 lakhs, and they get strictures from the NGT as a result of it. So I would like to propose two things. One, that certain central forces ensure the security of this university by the deployment, partly because the local administration seems unresponsive to the demands of the university, number one. Number two, I would like to say that the Prime Minister's office once again takes up the issue allegation can be of made. the organization No of the allegation can be post-Mela made against any and government, puts not only the on this, entire on all other resources issues, please. puts the entire resources Thank you. of the state Thank you, so please. that the university I will not is allow you to speak like that inconvenienced without my permission. in any way. Thank These are you. the two suggestions I would like to make as far as so that the university can function. It's been closed since August 17th, and which is very unfortunate. Right. Thank you. I would like to tell the members, during the 0 hour, no allegation should be made. Of course, he has not mentioned any state, otherwise I would have won. Secondly, the purpose of allowing 0 hour is to bring something very important, urgent, which is of larger public interest to the notice of the House, so that the concerned ministers can take note of it. You are seeing how we are taking note of certain important things. Please try to understand this. Sri Birendra Prasad, it's not your duty, na? We are there. Sri Birendra Prasad Vaishya. Sri Virendra Prasad Vaishya, please. Mic is not working, sir. Rajya Sabha Gallery 3, I am Virendra Prasad Vaishya. My mic is not working, sir. Please, see the mic. Mic. Hey, I am hearing your voice. Now it is correct. Thank you, sir. Since the morning of the 27th May, natural gas has been continuously flowing out of the gas well of the Bagjan in Assam, which subsequently caused the fire. The oil fire has been tamed a couple of days back after 110 Please, days of avoid. the blowout. The This is incident unnecessary. resulted death I have of already said that nobody should come to the well, even for other purpose of consulting Secretariat. Before the session. the result of incident, death of the 2 persons, including dynamic technograph. The result have affected very badly entire area. Many people injured, including 3 foreign experts also injured badly, sir. Right. There is a serious environmental damage in the area, sir. The oil which is located near Difu Soikhoa National Park, which is the only riverine island wildlife reserve, sir, globally. Right, Virendraji. Thank you. Gas leak at Bagjan, Assam, leading to death and injury of some people. That is the issue. Sri K.C. Venugopal. Please, no, I have gone to K.C. Venugopal. Thank you, Chairman, for giving me an opportunity. Please, it is not going on record. I would like to invite the attention of this House through you, Chairman, a shocking news which is related to the national security and privacy of the Indian citizen. Chairman, according to a media report, Indian Express reported that a Shenzhen-based technology company with links to Chinese Communist Party and Chinese government, tracking over 10,000 Indian individuals and organizations in its global database of foreign targets. This includes, sir, very shocking thing, the President of India and also you, sir, Vice President of India and the Prime Minister of India, right, and the opposition leaders, including Congress President is there, and Chief Ministers, MPs, and Army Chiefs, and industrialists. The company also has collected a database of bureaucrats in key positions, judges, scientists, and academicians, journalists, actors, and sportspersons, religious figures, and activists. This is a major area of concern, sir. I would like to know from the government whether the government has taken note of it
If so, Right. what action has been taken by, because Right. every day we are hearing the reports from Right, border Venugopalji. that Chinese is entering into our Two more territory. people are there with But you. the government, we didn't get any answer from the government, sir. Right. Government Anil is not Desai- ready to discuss Shri also. Anil Desai, I would Lok like to Sabha. know from the government. Please, please. Sri Anil Desai from Lok Sabha. Anil is not there. Anil is not there. Then Sri Raju Satav, same, on the same issue. Where is Raju? Quickly, add what you want to say. सर धन्यवाद चेयरमैन साहब ये जो बात अभी उठाई गई है सर इसमें ना ही सिर्फ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री Right, बताया उन्होंने. हाँ. नहीं सर So what is your suggestion or question? मैं एडिशन करना चाह रहा हूँ उनके रिश्तेदारों का भी इसमें समावेश है सर और इसीलिए ये बहुत गंभीर बात है इसमें सरकार द्वारा स्पष्टीकरण आना चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए क्योंकि ये देश के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है चीन की कंपनी भारत के इतने बड़े लोगों के ऊपर कैसे Right. जासूसी कर सकती है धन्यवाद सर Minister for Parliamentary Affairs, please take note of this. It has appeared prominently. So inform the concerned minister and see what can be done and find out the veracity also. Please. Sri Mallikarjuna Kharge ji. Kharge ji, we are going to discuss that, just only mention. We are going to discuss it in this session itself. I will be within 2-3 minutes. I will finish. Sir, sir the entire NEP is a backward-looking document that is looking 2,000 years back instead of planning and preparing our children for the future. Therefore, the value moral education in schools and higher education should be based on the principles of Constitution and not on the ancient cultural values. A provision in the Constitution maintained that in state and state-aided institutions there shall be no religious instructions, and Article 28(1) read, no religious instruction shall be provided in any educational institutions wholly maintained out of the state funds. In cities, children who have access to quality nursery education have already learned to read and writing by the time they join class 1. Poor children in towns and villages will start at a disadvantage because there is no proper policy defined for training the Anganwadi teachers who teach in the right manner. The poor children will start with a disadvantage of not having learned for 3 years before joining class 1. Nearly 50% of the students drop out after class 10. There is no plan that has been suggested to reduce this dropout. It is estimated 32.4% of these students dropouts are Dalits, 25.7% minorities, and 16.4% are tribals out of 50%. Teachers are already burdened with several duties like elections, Right. census, Kharge ji, please. vaccinations. We are going to discuss national education policy in detail. Because of your seniority, first time you have given a notice, I thought, okay, let him make a beginning. But the opportunity in this session, we are going to discuss. We'll discuss, but I am bringing a, Right, sir, but- that's why I am, just if you give me 1 minute, I will finish. Okay. So that Please. the teachers are already burdened with several duties like elections, census, vaccinations, etc., which makes it difficult for them to become concentrating on teaching, and it is impossible to improve the quality of education. Sir, by 2035, India will lose the advantage of its young population. It is time to look at the future within the short 15 years time period. Priority should be on the maths, science, English, if we have to provide an opportunity of development to rural and backward areas and children. Children belonging to a weaker sections and rural areas are already facing a disadvantage, NEET and G examinations. Indian culture will be learned by students through their language and literature classes. Such kind of activism to promote a single culture of Sanskrit or Hindi by the government will only keep backward children out of modern Thank you, education. Mallikarjun ji. Sri Pratap Singh Bajwa. Sri Pratap Singh Bajwa.
Bajwa from the Please, from the Rajya Sabha gallery. Sir, on the Please. No. thank you, sir. Sir, Now it's 2 over. September, He's already speaking. 2 September I don't want that situation. No, it will not happen. It has been sent यूनियन to all. गवर्नमेंट ने Please. सर ये अनाउंस किया कि हम जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेजेस का एक बिल पार्लियामेंट में लेकर आएंगे और इस बिल में सर इन्होंने 5 लैंग्वेजेस कही हैं कि हम इंट्रोड्यूस करेंगे, अंग्रेजी, उर्दू के साथ कश्मीरी, डोगरी और हिंदी। जब से सर देश आज़ाद हुआ है और जब ये यूनियन टेरिटरी बनी है तब तक 8 लैंग्वेजेस थी, जिसमें पंजाबी, गोजरी और पहाड़ी कॉन्स्टिट्यूशन 6 के नीचे पढ़ाई जाती थी और पढ़ी जाती थी। हजारों ही नहीं सर लाखों लोग जो हैं, अकेले सिख ही नहीं हिंदू और मुस्लिम भी जो हैं वो पंजाबी लैंग्वेज को पढ़ते हैं और जानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी भूल है कि जो सरकार ने की है। और सर कश्मीर और पंजाब का रिश्ता ऐसा है जैसे नाखून और बांस का रिश्ता होता है। ये मैं बताना चाहता हूँ 1808 में सर महाराजा रंजीत सिंह महाराजा रंजीत सिंह ने जम्मू की जंग जीती और अपने सिख एम्पायर का हिस्सा जम्मू को बनाया। राइट। श्री सरदार बलविंदर सिंह बुंदर, सेम थिंग। सरदार बलविंदर सिंह बुंदर जी प्लीज, बजवा जी प्लीज। आप यू हैव टू सिंपली से पंजाबी लैंग्वेज शुड आल्सो बी कंटिन्यूड। धन्यवाद चेयरमैन साहब। No, प्लीज, नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड। Don't praise Balwinder Singh Bundar ji. Please, not going on record. चेयरमैन साहब, That's why I'm allowing another member also who has given notice. चेयरमैन साहब, बदकिस्मती है कि जो फैसला किया गया है पंजाबी को राजभाषा के बाहर रखने के लिए बहुत दुखदाई है। और आज जो पंजाबी बोली है जे जम्मू कश्मीर में नहीं, ये तो वर्ल्ड लेवल पे बोली जाने लगी है। कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में इसको सरकारी भाषा में जगह मिल गई है। इसलिए ये जो बोली है ये तो महाराजा रंजीत सिंह का जो राज थी उससे भी पहले है। महाराजा रंजीत सिंह का राज अफगानिस्तान से, पेशावर से लेकर तिब्बत, जम्मू कश्मीर में रहा है और गवर्नर जनरल हरी सिंह नलुआ रहा है तब 1808 से पहले से भी है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको शामिल किया जाए, जो है घट गिनती की जुबान है और देश की सबसे अच्छी जुबान है, इसको शामिल किया जाए। थैंक यू प्लीज। ऐसा बैठ के बोलना नहीं बिना अनुमति। एवरीथिंग सीरियस ओनली विल बी रेज्ड इन द हाउस। आई नो द सीरियसनेस ऑफ आवर मेंबर्स। The special mentions, as I told you.